Hey guys, we are just going to wait for some more people to join before we kickstart. Hi Ghazi, hi Sarah. So we're gonna get both of them to join as well. So how many of you have seen the story or, hi Rabia from India. So how many of you have, know about the story that we're going to be talking about today? Hi Murzi. Hi Lena. Hi Abira. Lots of people joining. Hi Mateen and Amira. So Ghazi, I'm just gonna wait a few minutes for people to join. Hi Sarah. Before we can start. So guys, we are initially just going to take. Okay, so what's the topic? Let me just quickly brief you guys about what we are going to be talking about today. No hi to me, QS Malik. I couldn't figure out your first name, so that's why I couldn't. But yes, so you're the popo behind this account. LOL. I am a popo, but not in the way you mean it. I'm popo to two very lovely nephews of my own. But yes. So a few days ago, you guys must have seen ट्विटर पर एक इंसान बहुत वायरल हो गया because of his story of kindness. Hi Qasim, which was hi Kaval, which was basically, he found a wallet. And then what happened afterwards, he will share with us. So I am going to add now Ghazi himself. Okay, so just a bit of background. We've been friends with Ghazi for a very long time. So this is not the first time we're speaking to him, which is why we're actually a bit nervous. Okay. कुछ ज़्यादा ना बोल दें. So today we have the opposite problem of trying to, just keep things. Oh, we don't actually know the story, okay. To keep things a little bit calmer. Okay, so let's see. Hi, Jawad. Okay, guys, I think. Hello. हेलो आयशा, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक. हाजी, आप कैसे हैं? मैं जी बिल्कुल ठीक हूँ. Let me just fix my screen because I can just see comments right now. I think. Yeah. But So, जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आपका क्या हाल है? बिल्कुल ठीक. Before we start things off, so what should you call you, Ghazi or Taimoor? No, let's stick with Ghazi, please. Ghazi is the name Let's that stick I with find. Ghazi. Okay, great. So for those who don't know, Ghazi's entire family has the same first name. Damn. In a way. अच्छा मुझे आप सही से अभी आने ही तो दो. हमने सीधा आके ठक ठक ठक. Okay, perfect. So, just a little bit more context for people. We've been trying to do something like this way before this story happened, for very different reasons, which we may, end up actually doing in the future. But Ghazi, great to finally have you on Orange Wall. Wait, sorry. आप फिर से बोलो. मैं I आपकी agree. तारीफ कर रही थी, which you have missed. ओ नहीं बेस्ट है आयशा. माशाल्लाह आयशा से कोई बेहतर है नहीं. आयशा आपकी बात ही क्या है? मैं आपकी तारीफ करके ओ अच्छा चाहिए मेरी थी. तारीफ करी थी. सॉरी हाँ, मैं तो I'm kind of being a bit. हाँ, so basically what I was saying is that हम काफी देर से try कर रहे थे to do something on Orange Wall with you, but in a very different context. But finally you're here for something very important. पाकिस्तान की शान है, आप सारा है saying. Um, so welcome to Orange Wall. Absolutely great to have you here finally. Thank you so much for inviting me, and thank you so much for your kind words. That really means a lot. And so I think a lot of people here want to hear, the story from you. तो just अगर आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दें, आप लंदन में क्या कर रहे हैं, एंड ऑल्सो कर रहे हैं हम लंदन में. हम लंदन में क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम यहाँ? गेस करो हम कहाँ हैं? लंदन. लंदन. um, So, and if you could just tell us a bit
more about what actually happened. Yeah. So, Assalamu alaikum everyone, and I am my name is Ghazi Taimoor. I am very thankful to Aisha and Sarah for inviting me to this platform, and I am very thankful आप सब लोगों के लिए जो भी यहाँ पे अभी आए हुए हैं या जो ये टॉक सुन रहे हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे मुंह से निकलने वाली ब्लिबरिश सुनने के लिए. मेरा नाम गाजी तैमूर है. I am a Lahoriya. I just want to clarify that straight away. मेरा घर is London and Lahore, but heart is in Lahore. मैं लाहौर से मेरा ताल्लुक है, but I spend my summers in London, but the rest of my time I'm in Lahore. I work for Lums University. I'm the head of professional education at the Lums School of Education. And जो कहानी है जी वो इस तरीके से है. A lot of people have read the tweets and all of that. लेकिन कहानी इस तरीके से है, मैं अपने जिम से वापस आ रहा था पोस्ट ये दोपहर का वक्त है जुमेरात को, और वहाँ पे मैंने शोडिश हाई स्ट्रीट जहाँ पे उसके आगे मेरा घर है वहां पे जाके मैंने एक वॉलेट पड़ा हुआ देखा. मैं उठाया, जाके इर्द गिर्द देखा है कि यहाँ पे कोई हो सकता है कि देयर इज समवन हु इज अराउंड, और मैं कहूँ ये आपका वॉलेट भाईजान गिर गया, ये बाजी आपकी पर्स से ये गिरा है ये. तो अनफॉर्चुनेटली देयर वाजंट एनीवन अराउंड, बट इट वाज अ वेरी बिजी एरिया, सो देयरफॉर आई काइंड ऑफ न्यू कि द पर्सन मस्ट हैव ड्रॉप्ड इट अभी वरना किसी ने उठा लिया होता. तो एनीवे मैंने अब अंदर चीजें थी काफी, लेकिन जो मैंने देखा, मैंने एक कार्ड देखा, उसमें से मैंने वो सिर्फ कार्ड ही निकाला. कार्ड के ऊपर लिखा हुआ था राहुल, और उसका पूरा नाम तो जो भी पूरा नाम है, लेकिन राहुल का वो वॉलेट था, जिसमें मुझे समझ आ गया. Rahul Raichan for the purposes of this storytelling. But that was an interesting twist. I loved that twist, and I was like, why did I not think of that before? तो और आप लोगों को पता ही है, और सारा को इनफैक्ट ये वाले जोक्स जो है ना आयशा, जब भी हम लोगों के ये जोक्स क्रैक होते हैं तो सारा को जोक्स ज्यादा समझ आ रहे होते हैं जब मैं फिल्मी डायलॉग कर रहा होता है, एंड देन यू आर ऑलवेज रोलिंग योर आईज जस्ट लाइक गाजी दैट वाज अ लेम जोक. बट आई वाज लाइक सबसे पहली चीज तो मैंने मतलब पहले देखा कि यार अपने दोस्तों से ट्विटर पे पूछता हूँ कि किस तरीके से इसको ढूंढा जाए. तो मैंने कहा कि ये हमें वॉलेट मिला है और हमें ढूंढना है ये बंदा कौन है, इसको पहुंचाना है वापस. अ लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग यार मतलब जाके सीधा किसी को दे दो, पुलिस को दे दो, वो कर दो. आई रियली थॉट एट दैट टाइम कि यार कोई मतलब मुझे नहीं पता कि किसको देना. पहली बात कि पुलिस को कहाँ किसको जाके दूंगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे कैसे पता चला कि उस बंदे को मिला है कि नहीं मिला, रास्ते उनके आर्काइव में पड़ा रहे एक्सेट्रा. दूसरी चीज ये कि हम लोगों के साथ सबके साथ ही हो चुका है कि जिंदगी में कुछ ना कुछ तो खोया होगा ना, तो लेकिन ये वो प्यार की बात नहीं. I'm really controlling myself and not like but go on. हमने सबने जिंदगी में कुछ ना कुछ खोया होता है. मैं प्यार की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ किसी अपनी कीमती चीज की. तो आपको पता होता है कितना डिस्ट्रेस होता है. मेरे से आई स्वेयर अगर कोई बंदा डिस्ट्रेस में होना और मैं उसको देखूं और वो डिस्ट्रेस में, मेरी पर्सनालिटी ऐसी कि मैं उसकी टेंशन खुद लेके, यार अब वो पता नहीं परेशान होगा, पता नहीं सोच रहा होगा, उसके कार्ड्स एक सेकंड में आपको पता है किसी के हाथ में कार्ड लग जाना, ठक ठक ठक, वो जाके उसमें जाके ऐसे ही शॉपिंग लोग करके आते हैं. अब तो वैसे ही वो टैप होता है. तो आई वाज रियली स्ट्रेस्ड कि यार वो बंदा बेचारा टेंशन में होगा, तो जल्दी पहुंचाओ, किस तरीके से पहुंचाना है. तो आई स्टार्टेड ट्वीटिंग एंड आस्किंग फ्रेंड्स फॉर सजेशंस. सबसे पहले मैं जाके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे देखा, आई वाजंट एबल टू फाइंड दिस पर्टिकुलर राहुल देयर. देन आई ट्राइड टू लुक फॉर हिम ऑन गूगल, वहां पे भी जाके नहीं मिला. फाइनली जाके मैंने लिंक्डइन पे गया, वहां पे जाके मुझे वो बंदा लगा कि वो बंदा हो सकता है कि हो, लेकिन उसकी प्रोफाइल पे जाके मैंने जब देखा तो अगेन आई कुडंट सेंड हिम अ मैसेज देयर. तो मैंने वही होता ना जरा आपको मैं जरा फॉलो कर लूं, तो आई सेंड हिम अ फॉलो रिक्वेस्ट. बट उसको होना था कि ये क्या मतलब वैसी शक्ल देके माशाल्लाह मैं काफी लोगों को डरा देता हूँ. तो आई थिंक कि उस वक्त भी मुझे लगा कि वो मे बी ही वुडंट एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट, तो इट जस्ट बी ऑकवर्ड एंड इट स्टिल बी लाइंग विद मी. तो मैंने देखा वो बंदा काम करता है. फिर जहाँ पे मैंने काम की उसकी वेबसाइट को सर्च किया, वो भी नहीं मिल रही थी, कुछ उसमें भी एड्रेस वगैरह नहीं. फिर जाके कंपनीज हाउस की वेबसाइट होती है जहाँ पे अकाउंट्स रजिस्टर्ड होते हैं, उनकी मैंने अकाउंट्स निकाला, वहाँ पे मेरा फाइनेंशियल कंसल्टिंग का बैकग्राउंड वाला काम आ गया. जिंदगी में वैसे तो उसका कुछ नहीं किया मैंने. आई हैड अ लुक पढ़ाया लिखाया सारे करके जाया की पैसे माँ बाप ने मेरे. बट आई वेंट एंड आई हैड अ लुक एट देयर अकाउंट्स एंड आई फाउंड द एड्रेस वाज समवेयर क्लोज बाय. तो ये पूरा तकरीबन कुछ टाइम हो गया इस पूरी एपिसोड को. जैसे मैंने देखा एड्रेस, मैंने कहा भाई अगर यही हो सकता है मोस्ट लाइकली भागो. तो मैं ड्रामेटिकली कि यार भागो, बंदे को पहुंचाओ ये. और मेरे दिमाग में भी आ रहा था, मुझे था ये सारा जो है बल्कि जरूर मेरा ट्विटर देख रही होगी, मुझे था कि सारा से मेरी और वो हो रही होगी. तो मैं
I was tweeting as well कि राहुल मैं आ रहा हूँ मेरी जान, वो करके बीच में मुझे obviously प्रेट आ गया, वहां पे मैं रुक गया, कॉफी पी, As one does. मतलब एज वन डज, मतलब आप लंदन में रहते हो अगर आप कॉफी ना पी रहे हो तो वो करके कॉफी पी, फिर से याद आया कि ओह कहाँ था मैं, चलो भागो, भागा भागा भागा, ऑफिस पहुंचा, ऑफिस जाके घंटी बजाई, बाबूजी ने दरवाजा खोला, तो तो यूं करके फिर मैं just went in, and when I handed his wallet over to him, he was shocked beyond belief, कि ये कैसे हुआ, how did a person just bring this wallet back to me. So ये पूरी story है that I tweeted as I was doing it, and I was just so glad कि alhamdulillah the thing was got back to its owner. तो वो जर्रे जर्रे ने मुझको तुमसे मिलाने की कोशिश की है, ये कायनात में ये और वो, तो सारा वो दिमाग में इतनी सारी चीजें उस वक्त चल रही थी, बट आई वाज, सबसे बड़ी खुशी की चीज थी यार, किसी की खोई हुई चीज उसको वापस मिल गई, उसका नुकसान नहीं हुआ, कोई किसी ने उठा के उसका कार्ड जाके सेल्फ्रिजेस में या वो वहां पे जाके नहीं इस्तेमाल हुआ, एंड ही सेव्ड हिज मनी एंड हिज व्हाटएवर वाज इन द कार्ड व्हाटसोएवर, और उसको वॉलेट मिल गया, तो दैट वाज माय डे मेड. So before I ask you before I say anything, Sarah is also here. I'm just going to add her. हम हमेशा लेट जरा, नो मतलब ये Barber Sisters is. Ertugrul Ghazi, somebody is calling you. And also before, I ask any more questions or okay, somebody just called you Ertugrul Ghazi. मेरे अब मुझे I can't even see the comments anymore. मतलब गालियां भी पड़ी होंगी right now, but मैं तुम्हें बता देती हूँ. हाँ नहीं मतलब ठीक है. People, are basically just saying कि Hi Farah. Yeah, they're just kind of sending love, and there's तुम्हारे कुछ fans भी आए हुए हैं यहाँ पे who want you to answer questions afterwards. Some of them, including Munib, Mateen, answer questions. ये fans नहीं है, ये ACs हैं ये. Did you guys get the joke? Mishal is here, and lots of people just genuinely, appreciating what you did. Some people are calling you cute. Some people are calling you the real face of Pakistan, which is all, And Ertugrul Ghazi. And Ertugrul Ghazi, of course. मेरे चाचू थे वो. And Kamal as well, obviously one of your other fans. But sorry, Ghazi was just telling us the story. So मुझे बताओ असल में राहुल का रिएक्शन क्या था? Yeah, he was smiling, माशाल्लाह से, he has a great smile, लोगों ने तस्वीर में देखी, तो he was really happy, आंखों में उसके मतलब he was very emotional, and I don't think he was able to उस वक्त वो अपने emotions समझा पाया कि यार ये हुआ है, तो मतलब वो होता ना कि literally he was just like dumbfounded कि यार ये क्या हुआ? And you never expect कि कोई कभी जिंदगी में आपको actually इस तरीके से वो आपको आगे या चीज मिल रही हो वापस, yeah, 100%. So he was very happy, and I think that just made my day. I'm generally the sort of person who would crack idiotic jokes and happily take jokes on myself. अपना मजाक उड़वा के अगर लोग हंस लेना, तो I think that's my day made. तो उस वक्त तो I was on a high. I was like अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, मतलब I'm so glad एक बंदे को उसकी चीज वापस मिल गई. And then after that Joe whatever found it, and obviously at that point in time, and again I do want to say this कि I think पिछला पूरा साल लोगों के लिए बड़ा stressful सा और बहुत एक अजीब सा साल गुजरा है. There's a lot going on social media which I completely understand, and I think that's there's a lot of things happening at the moment, and people have been very distressed. So just के अगर किसी बंदे के एक वो इतने stressful time में अगर एक वो story पढ़ के if someone's just been able to smile, that's also किस तरीके से आपको वो कहते हैं ना कि किसी को मुस्कुराना भी या किसी को खुश करना भी वो भी एक इबादत होती है, तो वो that's just like my work done. नहीं, absolutely, and the fact कि we know that that's kind of like who you are, so it's I know मैं बहुत तारीफ कर रही हूँ. Not sure कि हाँ, not sure कि बाद में जाके अब ये अच्छा है ना, ये record हो रहा है. But ये record हो रहा है. I know I have to like stand by my words forever now, but I mean, I know कि अगर तुम Twitter पे ना भी डाल रहे होते तो you would have done this. And before we move on, like Shivraj, and there are a few other people who are, like sending very nice comments. So thank you guys.
We will kind of try and get people involved as well. I think if it works out and if Ghazi and Sara are okay with this. Did you think उस वक्त Ghazi भाई राहुल तो ढूंढ लिया है अंजलि कब sweet um, हाँ, so like did you think that जब उसे ऐसे Twitter पे लगा रहे थे that that you would get this kind of response from people that this would actually get so far? यार मतलब I think this is bottom line, कोई भी नहीं सोच सकता था at that point in time कि इस तरीके से it'll blow up. I think वो मतलब I was basically just being myself, and I have obviously my employers and and people who I work with, all of them on my Twitter as well, and कभी कभार मैं serious बातें भी वहाँ पे कर रहा होता हूँ, लेकिन it was just like I was just being myself, being a bit too much of myself. There are थोड़ा सा ज़्यादा dramatic किस्म का वो. I did not expect this at all. I am shocked beyond belief. I am alhamdulillah, I'm very humbled कि लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार मुझे भेजा. इतना प्यार कभी मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं किया जितना कभी इंडिया पाकिस्तान ने. In fact, my mom was like, I told my mom कि अम्मा मतलब अचानक से ये हुआ है और वो करके, तो पहले तो हम दोनों बहुत रोए क्योंकि मैंने उनको दिखाई. This was the day when I tweeted as well. I really wanted people to know, okay, men can express emotions. It's completely okay for men to be expressive. अगर रोना आ जाए तो आंसू निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं, इसमें कोई toxic masculinity आपकी नहीं challenge होती. तो work culture. But bottom line is कि it was okay, and I was very emotional क्योंकि यार इतने लोगों ने messages करके and मैं हाथ जोड़ के मैं माफी मांग रहा हूँ अगर मैं हर बंदे को जाके reply नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है क्योंकि मुझे message करे और I can't go back to them. But there's like मतलब कुछ 4-5 हजार unread messages on my inbox, and I'm really sorry. खुदा की कसम, if I could, I would thank each and every single one of you if I could. तो वो impossible हो गया. तो खैर anyway, मामा से मैंने बात की, मामा को मैंने फोन किया, मामा को मैंने ये कहा कि, and my mom's also the same, कि वो हल्की सी जरा हुई ना तो मामा के भी आंसू आ रहे थे, मेरे भी आंसू आ रहे थे. We're both connected in that way. मैंने कहा मामा मतलब ये हुआ है और वो करके, तो पहले तो हम दोनों रोए थोड़ा सा ना कि देखा अच्छा, this is so alhamdulillah, so great, I'm so proud of you. तो बाद में कहती है बेटा मतलब वैसे जनरली ना नेकी करके आपने दरिया में डालनी होती है, आपने नेकी करके ट्विटर पे नहीं डालनी होती. So that was hilarious, and that's why my mom is. So I'm very thankful for everyone for their love. I think just a side note, Ghazi's mother is actually lovelier than Ghazi seems to be. So baby है मैडम, छोटू सा पारू सा baby है, छोटू सा. Thank you, Kawal, for joining. She's just leaving now. Achha, so out of all the responses that you have gotten so far, what has been the best one? I've been the best one. Yeah, I think the best one, maybe a sadder one, but the best one was someone posted, someone posted that they were doing really, they weren't doing well at all mental health wise. Mental health is something I really, really strongly care about. They said कि कुछ अरसे से they've been very depressed and वो, लेकिन एक दिन के लिए जब वो सुबह उठे और उन्होंने ट्विटर खोला और वो, and that just made their day and that made them smile. And they just thanked me. और उसके बाद वो, और I think that was probably अभी तक जो मैंने messages पढ़े हैं उसमें से that was probably the best message. And I'm so alhamdulillah glad कि किसी की सब कोई again, एक तो नेकी वैसे की और वो अल्लाह ने उसका नेकी करने का मौका दिया, बट दूसरा कि अगर कि किसी को मुस्कुरान, किसी को का मूड बेहतर हो गया and someone felt uplifted was the best kind of message अभी तक जो मैंने पढ़ा है. गाजी आप अपनी पर्सनल लाइफ का भी बताएं. होप सो मैरिड ना हो आप, दिल टूट जाएगा हमारा. मेरे अभी we're going to come to those messages. We're going to come to कौन से messages? Somebody is asking, your fan, people were appreciating you. Somebody has said, Ghazi, is that all scripted? इसका जवाब मैं दे सकती हूँ because literally, I think just we know Ghazi and this is his life. This is Ghazi being Ghazi. ये ऐसे लोग जोर का चांटा मन में लगा होता. ऐसे दिन नहीं आते. कौन सी मूवी है? अब कौन सी मूवी थी का डायलॉग में बताओ. जोर का चांटा बचपन में लगाया होता. कल होना. I know. शुक्र है. हाँ मतलब वही ना, exactly मैं देखा था. Dude, like don't. Duh. ऐसा स्पॉट करने वाली क्या बात है?
Maybe we Yeah. can नए flex दामाद this की way as मुबारक well. तो नहीं क्या वो कहते हैं हाँ इनको जोर का चांटा बचपन में लगा होता है, ये मैं कह रहा था। नहीं ये स्क्रिप्टेड खुदा का वास्ता है यार, मैं कहाँ से स्क्रिप्ट करूंगा, और मतलब अगर स्क्रिप्ट चलो कर ही लिया तो जाके मतलब कहाँ से ये पता नहीं किसने ट्वीट किया मतलब नहीं, मेरे Ghazi is good at Ghazi is good at a lot of things. I don't think he can write the script. This is funny. लिखना लिखना नहीं है, पढ़े लिखे लोगों से मैं थोड़ा सा दूर रहता हूँ। हाँ, and what's They the just said, I am Ghazi's Anjali. यार एक as much as I appreciate all the love, एक तो मेरी तस्वीरों के नीचे आके ना कुछ लोग लड़कियों ने स्पेसिफिकली आके और अपनी दोस्तों को कमेंट करती हैं, देखो जरा बॉय चेक करो, बॉय चेक करो। आई एम स्टिल लाइक How's that been? How's the response been? I don't know. Like I they asked out yeah, hard or what? yeah. I'm honestly, I am. I can be a public person, but I think ये वाला response, and I'm very grateful, and we said this before as well कि वतोइज़ु मंतुशा वतुज़िल्लु मंतुशा कि अल्लाह जिसको इज्जत देता है और वो एक सेकंड में अल्लाह इज्जत ले भी लेता है। तो मैं I'm very grateful कि अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है और इस चीज में मशहूर किया है कि कोई अच्छा बंदा है, वरना हरकतें मेरी वैसे जूते खाने वालों की होती हैं। मतलब my dad was like बेटा तुम अच्छा सोचो वॉलेट चोरी करने पे फेमस हो जाते हैं। You know, yeah, Shivraj, listen, 3 people limit है, and you can ask any question you want to ask Ghazi. You can message it, and इतना भी we डायरेक्ट will. करके ना, मतलब any question लोगों ने No. Any questions regarding Ghazi's great work and what he does? You guys should know more about Ghazi's life beyond this because it's amazing. यार वैसे एक चीज, while if you allow me, I think एक चीज जो मैं I don't know where this is going to go. I think Allow me एक आधा और पूछने के बाद you have to wait for the answer. If you allow me के बाद शुरू नहीं हो जाते। Oh, अच्छा। यार क्या मतलब गाइस, ये मेरी असलियत है, ये मुझे और उसी चीज का हमें डर था कि हम लोग इस लेवल पर आ जाएंगे। बेसिकली इसको ऑनलाइन बुला के जलील करो। So do you allow me, Sarah, would you allow me to say one thing? Please, इजाजत, Okay, इरशाद। Aisha, do you allow me to say a small thing? Absolutely, I think we've been talking about it, and I know this is a couple of more days, and after this, it's going to die down. We halki si hype aati hai, which I'm very humbled about. I just think one thing that I hope people retain after this, and koi agar iska koi impact mein ho, is just the culture of empathy and the culture of kindness, because हम अब जिस दुनिया में रहते हैं, हमने देखा है कि कोविड ने फॉर एग्जांपल साबित किया है कि वी ऑल कनेक्टेड। मतलब एक बंदा भी बीच में डिफॉल्ट करेगा ना तो सारे पूरे कश्ती डूबेगी। और उसी को अगर उल्टी साइड पे कर जाए कि अगर एक बंदा भी कोई नेकी करे या एक बंदा भी काइंडनेस करके वो दरिया में डाले तो वो बढ़ती जाएगी आगे जाके। एंड आई जस्ट रियली थिंक यार अपने जैसे लोगों के साथ ही मेहरबानी करनी, या अपने जैसे ही लोगों के साथ ही अगर आपने उनको सपोर्ट करना है, या अपने ही जैसे लोगों के ऊपर एहसान करना है, तो दैट्स नॉट काइंडनेस। काइंडनेस तो वो है कि जब रिगार्डलेस ऑफ एनी पर्सन्स जेंडर, रिगार्डलेस ऑफ एनी पर्सन्स बैकग्राउंड, देयर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, खुदा का वास्ता है। मतलब अमीरों को लगता है कि हम अमीरों को ही जब आपस में करेंगे ना तो वो अच्छी चीज होगी, मतलब गरीब तो वो करके, तो रिगार्डलेस ऑफ दैट भूल जाएं कि लोग किस में एहसान, अल्लाह ने कहा है कि एहसान करें एक दूसरे के ऊपर। ह्यूमैनिटी का एक वो है कि एहसान करेंगे तो यू कैन अपलिफ्ट एंटायर सोसाइटी, एज अपोज टू सिर्फ अपने जैसे को ढूंढ के अपने सोशल सर्कल में, अपने सोशल स्टेटस से बंदों ने सिर्फ बंदों में, बंदियों में नहीं, वो सारी वो जो डिस्क्रिमिनेशन है उनको भूल के हमें एक दूसरे को एहसान करें। दैट कैन बी अ ग्रेट सोसाइटी टू लिव इन, स्ट्रेंजर्स आर काइंड टू ईच अदर, एंड नॉट जस्ट काइंड इन पर्सन बट ऑल्सो काइंड डिजिटली। We live in a world which is now completely digital. We don't know कि अगला बंदा जो है, आप कमेंट लिख रहे हैं, उसने लड़की ने किसी ने तस्वीर अपनी लगाई है, आपने नीचे जाके कह दिया ये पहनावा क्या है, मोटी लग रही हो, काली लग रही हो, ये हो। That's just a very unkind society that we live in, and that's a culture that we need to change. So regardless of कोई बंदा कौन है, I think we really need to establish कि kindness जो है वो खुद जब देंगे किसी को, आपको भी इसी तरीके से वापस मिलेगी। नहीं, absolutely, and I think I wanted to actually speak about this other thing as well कि जब हमारी बात होती है
generally be. So one theme that keeps coming up again and again is actually, just people, trying, making an effort to be a bit better as human beings, but also about, a little bit about mental health. That I know that is something that you very strongly feel about, and not just like in a generic way, but actually, especially about like men's mental health, men trying to express themselves and all of that as well. So and obviously, Jesse Tumara Ye Hua, and I think one of the first few reactions that you shared from your own side was, a very vulnerable you, showing your emotions and thanking people. So, I wanted to kind of just kind of speak to you about that as well. Okay, how important do you think it is for men to be able to express themselves as well? Asha, thank you so much for asking that question, because I really, really, this is something I speak about with all of my friends. This is something I speak about जहाँ पे भी मुझे किसी भी फोरम पे अगर मौका मिले, अपने दोस्तों के साथ, casually, अपने parents के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपनी family में. One of the leading causes of suicide within men aged kind of within the 30 to 45 bracket in the UK, as I understand from some statistics I read a while ago, is suicide. And men, I really strongly feel, do not feel comfortable to be able to express their emotions publicly. कि जो भी चीज है ना अपने अंदर ही रखना है, बस कोई मर्द बनो और ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की एक दीवार सामने अपने बना के बस हमने एक्सप्रेस नहीं करना, वल्नरेबल नहीं होना, वीक नहीं होना. वीक हो गए तो मतलब और मतलब वही द जेंडर्ड होता है ना, उसकी लैंग्वेज अराउंड इट इज वेल, कि ये तो औरतों का काम है, रो रहे हो, लड़की हो क्या. और ये एक मजाक के, और रोतियां तो लड़कियां रोती हैं, बंदे तो नहीं रोते. इनफैक्ट बल्कि बहुत मशहूर जो था ना कि बंदा बन गया, मतलब कि मतलब man up. That's very problematic language, because that's basically telling men that you can't be emotional, you can't be vulnerable. And what I felt that day when I was reading through a lot of these messages, pehle dusre teesre din to my inbox alhamdulillah was just like, it was just flowing with messages कि यार ये हुआ. और I was overwhelmed, and I called my mom up and I started crying I was on the phone with her, and I started crying in front of her, and she started crying as well, because she knew what was happening as well. And I didn't. उस point पे मुझे लगा कि यार अब मैं जाके I could just be like, okay, मुझे तो कुछ फर्क नहीं हुआ, but I was really vulnerable at that point in time, and मुझे कोई शर्म नहीं है ये कहने में. I don't feel मतलब embarrassed talking about emotions at all. I'm probably one of the few men I know who loves to talk about feelings and loves to talk about emotions. So I was very vulnerable, and I decided that just to break that stereotype of men not being able to express emotions, I posted that online. And अपनी रोती सी गंदी सी एक शक्ल मैंने बता के वो भी कर दी. उसको फिर मुझे थोड़ा सा क्रॉप करना पड़ा क्योंकि मेरी नाक बहुत ज़्यादा उसमें नजर आ रही थी. But and उसमें भी even there were a lot of people who validated that point and said कि हाँ मतलब thank you for sharing what you shared, and I'm again very grateful for that. And I think one thing I want to ask people who are watching right now is also that, Ghazi, what's your Insta handle? Is it Ghazi.Taimoor or Ghazi Taimoor? I think it's Ghazi.Taimoor. I don't know. Okay. No, it's just Ghazi Taimoor. But I mean, hi, just Ghazi Taimoor. And for anybody watching, I am going to pin that here, because what I want is that, I would hope, at least like, we can kind of, keep talking about this point, if nothing else from this entire episode, that, people can actually, reach out to your platform as well, for this purpose, and that you also continue this conversation going. Because, obviously, like, बहुत सारे हमारे यहाँ influencers, and there are a lot of people that we kind of look up to, or we are told to look up to on social media. But एक चीज, it's positive influences are not so easy to come by. And I genuinely feel like अगर फिर मेरे दोस्त ना भी होते, so I genuinely feel that you are a positive influence. So guys, I'm going to just pin his Instagram account, so do kind of make sure you follow him there, and you take this forward for the men who are watching, and for the women as well. Just encourage this kind of emotional vulnerability from men around you as well.
I think one thing that Ghazi just said, that vulnerable is not synonymous with being weak. Yeah. If you are like, it's not going to make you a smaller person. It's not going to make you a weaker person if you are emotionally vulnerable. So I think that's something that really, really, we should also like think about in our heads, and not look at people differently if they show us a softer side of theirs. कि नहीं नहीं ये तो है ही ऐसा. Yeah, yeah, and I think there's beauty in tears. I really strongly feel कि अगर if you are able to overcome that barrier of how you've been taught masculinity in your head, and you need to make that brave move of being able to be vulnerable in front of people, talk about your mental health. Talk about what you're facing, any problems that you're facing in your life. Talk about any issues. Be more communicative to your partners. Be more communicative to your parents. Be more communicative to your siblings, people around you, and express कि यार this is how I feel about a particular thing, as opposed to नहीं I'm okay, I'm okay. उससे क्या होता है end पे जाके वो I'm okay, I'm okay, I'm okay. We become these damaged adults who haven't expressed their emotions at all as growing up, and we just don't know. और फिर आगे वो circle perpetuate होता रहता है. फिर हम जो करते हैं वो अपने बच्चों के साथ भी हम ये करते हैं, फिर हमारे बच्चे उनके बच्चों के साथ भी ये करेंगे. So therefore that cycle needs to break, and that needs to break with us, and we need to be able to talk about yeah, I'm vulnerable, yeah, इस तरीके से भी हो. Yeah. Thank you. Did you just say there's beauty in your hairs? Hairs. आपके माशाल्लाह बाल बहुत खूबसूरत हैं. मतलब beauty in your hairs, in your hair for sure. नहीं, I said beauty in tears. मैं सोच रही हूँ कि ये beauty in your hairs मैं बचपन वैसे ही तोतला था, तो वो ब्यूटी इन योर टीयर्स आंसू खूबसूरत होते हैं कभी के बाद. पुष्पा, I hate tears वाले tears. Hi. We don't hate tears, Pushpa. Let's just say that has been very wrongly propagated from like that era. Yeah, and if he's giving you tears, then you need to cut him off. अगर ये वो वाले tears की हम बात करें, so नहीं, नहीं वो वाले tears नहीं. अच्छा, एक और चीज, बच्चे भी देख रहे हैं. One more thing I wanted to ask you is that, which has been most like, obvious in this whole thing, and people have really appreciated, this whole India-Pakistan angle to this story. Obviously, that you have kind of shown a very positive side of Pakistan. और तुमने ये लिखा भी, मैं तुम्हारा Twitter, I was reading through your Twitter, aka stalking, and you had said somewhere कि जो तुम्हारे emotions हैं towards like one Indian like that are जो तुमने देखे हैं, most people in Pakistan, despite whatever socio-political context and background we have, mostly people around you, especially in London, have those kind of emotions. And I know you, because you have some very close friends from India. I know, the same for myself. My best friend is from India. Some of my closest friends are from India. So in that way, we know a lot, and there is that kind of fondness as well, which is not a one-off. So have you learned anything more about that side of things, or anything you want to say around that? Yeah, and it's me, without making it political at all, which I appreciate. This is a political discussion as well. I'll take a step back, Asha, and I'll talk about empathy, हमदर्दी के और हर लेवल पे. ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं, हर लेवल पे मर्द औरत के रिलेशनशिप में, किसी अमीर गरीब के रिलेशनशिप में, किसी काले गोरे के रिलेशनशिप में, किसी ब्राउन चमड़ी और सफेद चमड़ी की रिलेशनशिप में, किसी मार्जिनलाइज्ड कोई आइडेंटिटी के शख्स की उसकी रिलेशनशिप के डायनामिक में, हर एक में बॉटम लाइन है कि एम्पैथी आपको लानी है, कि आपको समझना है, आपको अंडरस्टैंड करना है कि हाउ डू दे फील, व्हाट आर देयर फीलिंग्स लाइक. Yeah. प्लेटफॉर्म की जो हम बात करें, अल्टीमेटली ये है कि we need to be, sorry, can you hear me? No,
10 seconds के लिए तुम्हारी आवाज कटी थी, but now we Sorry, I can think hear that you. was someone calling me. Sorry. So इंडिया पाकिस्तान हो, ये जो भी डिफरेंट आइडेंटिटीज हो, अल्टीमेटली हमने एक दूसरे की तरफ एम्पैथेटिक होना है। जब किसी का बेटा मरता है तो माँ, चाहे वो किसी की माँ हो, उसकी माँ रोएगी उसकी बेटे की लॉस पे, या अगर किसी की कोई चीज गुमती है तो उसको दर्द उसी तरीके से होगी जिस तरीके से आपको दर्द होती है। अगर किसी को कोई चोट लगेगी तो उसको उसी तरीके से दर्द होगी जिस तरीके से आपको दर्द होती है। और उसके सिचुएशन में आके सोचना, उसके हालात के बारे में सोचना, और अगेन सिर्फ इंडिया पाकिस्तान पे ही नहीं अप्लाई होता, ये हर चीज में अप्लाई होता है। कोई आप सड़क पे आप चल रहे हो, एक गरीब बंदा, हम जैसे बेहिस हो चुके हुए हैं, हमने अपनी वो सेंस ऑफ सेंसिटिविटी हमारी खत्म हो चुकी है, क्योंकि वी लिव सराउंडेड बाय सो मेनी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस कि वी डोंट एम्पैथाइज कि यार जब हम गाड़ी पे जा रहे होते हैं, या अगर हम अपनी बैठे हैं व्हीकल में और कोई अगर आके गाड़ी पे कोई गरीब अगर फर्ज पे पैसे मांगता है या वो, तो लाइक वी वेरी कन्वीनियंटली इग्नोर देम कि बस हाँ से ये माफ करो या वो करके, which are very typical dialogues। और वहां पे एम्पैथी करना कि यार हाउ डू दे फील। फॉर एग्जाम्पल, एक सोसाइटी जिसमें एम्पैथी खत्म हो जाए, वो सोसाइटी फिर सोललेस सोसाइटी होती है, वो खोखली सोसाइटी होती है। और उस एम्पैथी को एम्बेड करना और याद रखना कि जो भी डिफरेंस है, वो डिफरेंस अपनी जगह जहाँ पे भी करके, लेकिन इंसानियत का नाता आपका अभी भी हर एक से उतना ही है जितना होना चाहिए। जितना आपको दर्द होती है उतनी उनको दर्द होती है। और वो दैट्स बिन वेरी हार्टफुल। आई थिंक इस वजह से उस साइड ऑफ द बॉर्डर और इस साइड ऑफ द बॉर्डर पे ये चीज मेरे ख्याल है क्लिक की कि इट वाजंट अबाउट वो, इट वाज जस्ट अबाउट ह्यूमैनिटी, इट वाज जस्ट एन एक्ट दैट वो। और उसमें बॉलीवुड के रेफरेंसेस थे और राहुल मैं आ रहा हूँ वो करके, उसी तरीके से बॉर्डर के उस पार भी लोगों को हंसी आई जिस तरीके से इस पार हंसी आई। क्या तुम्हारे मुल्क का हर बेटा तुम जैसा है? किसका सवाल है ये? नहीं, सवाल है ये। माँ नंदिनी, नंदिनी, what, where is this from? You first need to tell. या मूवी बताओ। ये नहीं सारा दोबारा पूछो, सारा दोबारा। इसने नंदिनी बोल दिया है, नंदिनी एक दफा बोल दिया है। गाजी नंदिनी is wrong. सारा ask it again. क्या तुम्हारे मुल्क का हर बेटा तुम्हारे जैसा है? उफ, ये मुझे पता है। मुझे पता है, तुम्हें पता है? किसी को और कोई पता है? अगर पता है तो जनता का पोल लीजिए। You want to phone a friend or ask the audience? I think I'm going to ask the audience here. So Audience, okay, they're not wrong, you know. I can't even see the comments anymore. Oh, you can't see the comments. Oh, okay. ये सारे लोगों ने, जितने लोगों ने मुझे गालियां दी ना, वो मैं बाद में पढ़ूंगा जाके। जैसा देश है तेरा, हाँ वैसा देश है मेरा। अच्छा ठीक है, फिर समझ आ गई। क्या समझ आ गई? ये मतलब हाँ वीर ज़ारा मुझे समझ आ गई थी। मुझे एम्बैरेसमेंट हो रही है ये, मतलब उन लोगों ने मेरी बॉलीवुडनेस का जो है ना, ये जनरली मैं करता हूँ और तुम लोगों को नहीं आता ये जवाब। उसके बाद But I'm so impressed. Everybody who answered correctly, meet me side. मेरी कजिन्स का मैसेज आ रहा है। मैंने अपने खानदान की नाक कटवा दिया है। मैं गाजी तुमने हमारे ग्रुप की नाक कटवा दी है। तुमने हमारे ग्रुप की नाक कटवा दी है। और ये कहाँ से है? हमारे ग्रुप की नाम say it again. नहीं, अब पता है, मैं आंसर ही नहीं कर रहा, इसलिए मेरा खोखलापन नजर आ रहा है। गाजी हार गया पर कुकी जीत गई। गाजी, please, what's your horoscope? 13 people have asked this. ये मुझे पता यार, ये सवाल में देखने बार मेरा हॉरोस्कोप, मेरा स्टार क्या है? मेरा स्टार ये तो हमारा सुपरस्टार है। आई एम अ लियो एक्चुअली। नाइस। और मेरी 11 अगस्त को क्या डॉन तो नहीं, मैं लियो और मेरी 11 अगस्त को बर्थडे होती है। आने वाली है, you guys? आने वाली है, yes, it's in a couple of days. What do you want people to do for your birthday? Nothing at all. I want people to forget me by the time that we get to my birthday. No, I don't want people to forget you. Yeah, मैं बहुत awkward होता हूँ अपनी birthdays पे. I don't know whether people have been able to see this or not. अभी थोड़ा सा जाके मैं बोल पा रहा हूँ. मैं I can't even
some people commented on my video जो मैंने पहले post की थी, thank you की on a couple of days ago. People were like कि यार आप तो बहुत shy हैं, आप तो कैमरे में भी नहीं देख पा रहे. And I was like, how did people pick that up? मतलब that's so I can handle attention, but alhamdulillah again मैं ज़मीन को हाथ लगा के कोई तकब्बुर नहीं, और अभी I'll come back to तकब्बुर भी as well. Can we do that? ये बहुत ज्यादा मुझे अटेंशन मिली अचानक से, और मैं खुदा का वास्ते अगर आपके घर में कोई बकरा है या कोई मुर्गी है तो मेरे सर पे हाइपोथेटिकल ना वो बार के आप मेरा कोई सदका दे दें, मतलब और मे बी जस्ट डू अ गुड एक्ट एंड मेरे कुछ सदका का टाइप वो या सो आई एम जस्ट या एक तो मैं वो कर रहा था, और दूसरी चीज तकब्बुर. कैन आई टॉक अबाउट तकब्बुर? Of course you can. अब सारा आप ही ज्यादा देने, क्योंकि मैं बोलना शुरू कर दूंगा then you're going to be like Okay, so I respect everyone, or जो भी influencer culture etc. I understand that. I don't want to be an influencer. I don't want that word associated with me because I think it carries a lot of एक तो it's a very strong word, influencing people, and it carries a lot of responsibility. अगर आप की काम को किसी ने देखा है वो करके, तो I think I feel under a lot of pressure. कि अचानक से ये क्या इन्फ्लुएंसर एंड वो, सो आई डोंट वो एक तो आई डोंट वांट टू एसोसिएट विद दैट वर्ड. सेकेंडली ये कि तकब्बुर, मैं बहुत मुंह फट किस्म का इजी किस्म का बंदा हूँ. दैट्स व्हाई आई एम गोना बी. आई वांट टू टॉक अबाउट, सो द रीजन व्हाई आई एम ओके विद people following my page is because I do post about things I'm very passionate about, which include mental health, which include talking about empathy and kindness, which includes inclusivity, which includes education. और ये सारी चीजों की वजह से my friends suggested me कि यार तुम्हें एक अच्छी चीज की वजह से attention मिल रही है, and there's a need for people to come and do this kind of work, which is why I've agreed to do what I'm doing at the moment. और मैं कभी भी, अल्लाह मुझे कभी भी मुतकब्बर ना बनाए. मुझे खुद तकब्बुर से बहुत छेड़ है. I hate people who are pompous or up themselves, and I don't want to be one of those people. I'm not suggesting anyone is. बाकी सारे लोग best हैं. You continue doing your work. But yeah, that's something I feel. Sorry, Aisha, कुछ कह रही थी? Absolutely. No, I was going to say that, I think as people will get to know you a little bit more, they will realize that, that you're not that kind of a person. Somebody sharing your age. One of your friends is, because people are asking about your age. Ghazi is 31 and actively looking for all those asking. And, I wanted to, because education related, कोई questions भी आए हैं. Mishal has asked a very important question. So, before we get to the question, I wanted to kind of, ask you to take a step back. And I know you do a lot of work for education, including your education background yourself, but also the work that you practically do, with your mom in Lahore. So, thoda sa, can you just tell us a little bit more about your education in education, and also about what happens in Lahore and all of that. Sure, thank you. So I was a finance professional, as I think a lot of people who graduated in London kind of fall into that route. तो मैं फाइनेंस में काम किया, फाइनेंशियल कंसल्टिंग में in London for about 7-8 years, and every day when I would get up, I would just think कि यार मतलब मैं क्यों अमीरों को अमीर करने में लगा हुआ हूँ. मैं अमीरों की नौकरी करके एक बड़ी कंपनी में काम कर रहा हूँ, but that's not really who I am. It's not really something that drives me. और फिर again मेरी politics kicked in, and I didn't think that was right. One fine day I got up and I left everything. And अपने आप को मैंने कहा कि यार अब नहीं हो सकता ये. And I applied for a master's program, left London, went to the US. अपना पूरा मैंने career change किया. मैं finance में पहले काम कर रहा था, मैंने master's किया जाके US में मैं चले गया. वहाँ पे मैं Harvard University से I did my master's in education policy. I graduated a couple of years ago, and I decided कि अब मैंने पाकिस्तान में जाके काम करना है. What drove that change was I work with children already. I have me and my mom. We run a network of schools, and what your detail I'll share that later. But we run a network of schools, and we educate children who can't afford to go to schools. And हमारे पास तकरीबन 3,500 से 4,000 बच्चे हैं in our schools, which are scattered around in Lahore.
and we work with them to be able to give them access to education so that they can earn livelihoods and they kind of become socially mobile, ताकि जो उनकी गुर्बत है, जिस गुर्बत में वो पैदा होते हैं, उस गुर्बत से वो जान छुड़ा सकें. And the work that I want to do in the future, the reason why I returned back to Pakistan, I specifically want to work within the education space. I want to, so there's a few different things that I am currently working on. Lekin the ultimate goal is कि तालीम और तरबियत दो different किस्म की चीजें हैं हमारे स्कूलों में. और यार, I was talking to Gio yesterday, and I'm so glad कि they posted that कि हमारे स्कूलों में सिर्फ तालीम के ऊपर काम होता है, तरबियत पे काम नहीं होता. And we see there's so many पढ़े लिखे लोग when they make अब भरा है, मतलब I don't want to go into that अभी, लेकिन पढ़े लिखे लोगों से किस तरीके के कमेंट्स आते हैं औरतों के खिलाफ, गरीब लोगों के खिलाफ, काले गोरे के फॉर एग्जांपल. मतलब हमारे मुआशरे में फॉर एग्जांपल दिस ऑब्सेशन विद गोरापन वर्सेस कोई गोरा या काला, इस तरह की बातें जो आती हैं ये पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं. तो उसके वही बात है कि ये हमने लोगों को इंग्लिश पढ़ना तो सिखा दिया, हमने मैथ्स पढ़ना सिखा दिया, हमने उनको इंग्लिश बोलना सिखा दिया वो करके, लेकिन उनकी तरबियत काइंड ऑफ दैट क्रिटिकल थिंकिंग पे सोचना है कि यार ये जो चीज हो रही है ये गलत हो रही है. फॉर देम टू बी एम्पैथेटिक कि यार ये जो बंदा है ये क्या फील करता है अगर मैंने इसको किसी को मोटा कह दिया, मैं किसी को काला कह दिया, या कोई तैयार होके आया तो मैंने उसको कह दिया तुमने कपड़े कैसे पहने हुए हैं. इस तरह की बातें करके people feel, and that's something that's lacking within our education system in Pakistan completely, and that's what I want to do. So I am going to be inshallah working in the education sector. एक पहला मेरी जिंदगी का गोल है कि हर बच्चे को स्कूल में होना है, period. There cannot be any more out of school children in Pakistan. And secondly is I want to work on the quality of education that we impart within our education sector, and ensure that social emotional learning is an important part that needs to be incorporated at every single level within our education sector. और मैं बच्चों के साथ already काम करता हूँ, teaching them empathy, teaching them वो I अभी छोटे scale पे, लेकिन इंशाल्लाह आगे जाके I want to work in the consulting space, education consulting space, and policy consulting space, and inshallah make a change on a national level within the Pakistani education system. And can I also ask what will happen to Janu Janwar once you're back in Lahore? Okay, Janu Janwar. तो जानू जानवर का कॉन्टेक्स्ट मेरा ख्याल है लोगों के पास नहीं है. So मैं that's मेरी जिंदगी का लेकिन वो मकसद. अगर if people go to one of my stories highlights, they'll probably see it there. मुझे जानवरों से बहुत ज्यादा प्यार है. I love animals. I can literally like पूरे सुबह से लेके शाम तक अगर आप मुझे जानवरों के साथ छोड़ दें, कोई जो कड़ली किस्म के जानवर होते हैं, and again we'll talk about where that comes from, and there's a lot of things that I want to talk about later on, which inshallah I will be doing so on my page. So Janu Janwar is a concept that I'm starting inshallah in Pakistan, where I will be using animal assisted learning techniques to use animals as ways to teach empathy to children. तो हम जानवर लेके इंशाल्लाह हम स्कूल्स में जाया करेंगे, जानवर लेके we will be going to children, people can come over. अभी फिलहाल तो मेरे घर पे आते थे सारे, मेरे पास बहुत ज़्यादा भी जानवर हैं, which include बहुत से खरगोश, different किस्म के, बहुत ज़्यादा कुत्ते हैं माशाल्लाह, and मेरे बेबीज हैं वो. And I have baby ostriches, I have guinea pigs, I have a lot of birds, I have और क्या tortoises, bunnies, वो करके खैर अलबत्ता इस तरह की मेरे पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं अभी. वो सारे मेरे पास बच्चे आते हैं who in a very playful manner interact with them, and the whole goal is कि आपने अगर बच्चों के साथ, आपने अगर जानवरों के साथ बड़े हुए हैं, जानवरों के साथ आपका इंटरेक्शन हुआ, तो you become an empathetic individual. So that's what Janu Janwar is. There's a page, I'll post that page soon. So go and follow that page, and inshallah once I'm back in Lahore, I'll be working on that more. Absolutely. मेरे पास दो डॉगी. सारा मैं और आप मिले कैसे थे? मैं अपने कुत्ते को वॉक करा रहा था, आप अपने कुत्ते को वॉक करा रहे थे, पर सारा के पास तो डॉगी है ही नहीं. मेरे पास दो डॉगी. Don't kick my dukhi rag. मेरे पास दो डॉगी. दो नहीं एक्चुअली, वैसे चार हैं बट. और मैं हिरन भूल गया अपने, सॉरी, गजल और सॉरी मेरे पास 3 हिरन भी हैं जो मेरे बेबीज हैं. आई पोस्ट अ पिक्चर ऑफ देम लाइक लिकिंग माय फेस. तो एक का नाम गजल है, एक का नाम गीत है, और एक का नाम शेरा है. तुम्हारे रैबिट सर का नाम है, प्लीज ये भी बता दो.
अच्छा, एक का नाम है बनी और एक का नाम है गाला. बनी गाला. Oh God. सबके. Very Um, cute. So I have okay, Bani there Gala, I are a have few Wi-Fi, I questions. have Chai Latte, I have Romeo Juliet, and फिर उनके बच्चे I love हैं फिर chai जाके latte. चाय लाटे बहुत फादुस हैं वो हैं भी चाय और लाटे कलर के. So yeah. इंशाल्लाह I'll be posting more about them when I'm back in Lahore. मेरा ख्याल है मुझे लाहौर में कोई अभी मिस नहीं कर रहा, सिर्फ जो मिस कर रहे हैं ना मेरे कुत्ते और मेरे खरगोश. उसके अलावा ये. ओ हाँ, और सारा. Don't हम. miss. One, हाँ सारा भी I miss मिस you करिए in और Lahore. मैं करूँगी when you go back. Exactly. Not that we get to meet very much in There London, are a but few people asking a couple of things. Somebody's मैं asking, जल्दी जल्दी जवाब देता हूँ. हाँ कि आप कमाते कहाँ से हो? I mean, कि actually, काम मुझे ये करते हैं? पूछना, I want you to speak about this a little bit more, because when you're speaking, so obviously it comes across as like you're only doing these things like working on the education sector and also working with animals, जानवर and all of that. और एक तरह से लोग थोड़ा सा वो कहते हैं यार हर कोई ये नहीं कर सकता क्योंकि आपकी जॉब के साथ आपको वो करना पड़ता है. Yeah. So I just want to kind of you to थोड़ा Clarify. सा clarify or just like very very briefly, I know it's a very personal information, to just tell people that yes, you do have a work, like you have paid employment and all of that, um, and you still kind of make time out to do these things. Yeah. They're very important to you, but तुम ये नहीं कह रहे लोगों को कि सब कुछ छोड़ दो and वो करो, because वो भी practical नहीं है. Yeah. नहीं, not at all. And also, I it's think वहीं not पे like empathy. you're coming from like a place of like so much privilege that you have like indispensable funds. Okay, this is very, because a lot of people think that charity work is for the bourgeoisie types. Like Yeah. it is for a Yeah. certain level of people, but it's not. Like you clearly have full-time work as well. लेकिन अब मैं यहीं पे वही एम्पैथी वाली बात कि मैं अपनी तरफ से ऊपर से आऊं कि जी मैं तो ऐसे करता हूं तो आपको भी ऐसा करना चाहिए. आई कंप्लीटली गेट इट कि यार नॉट एवरीवन कैरीज द सेम लेवल ऑफ प्रिविलेज दैट आई डू. आपका प्रिविलेज दूसरों से ज्यादा हो सकता है, उनका प्रिविलेज. तो प्रिविलेज एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इसके बारे में कभी फिर बात करेंगे. लेकिन मैं खुद calm. I work full time for lungs. I work in the education sector. I have a full time job. I will have a startup. I'm working on a startup. Inshallah, I do plan to do my own thing, and that's always been the dream. I feel I'm more of an entrepreneur than both. So I will be. Inshallah, that's what I want to do in the future. एंड जो नॉन प्रॉफिट वगैरह इज एन एक्टिव चॉइस था आई मेड. जब मैंने लंदन छोड़ा था तो मुझे पता था कि यहाँ से मैं जाके अपनी फाइनेंस की नौकरी छोड़ रहा हूँ जहाँ पे एक मैं बट व्हाट आई डू नाउ इज समथिंग दैट मेक्स मी हैप्पी, समथिंग दैट डज पे माई बिल्स. मुझे पैसे हर एक को चाहिए होते हैं. आप मतलब मैं नहीं वो कहूँगा जिस सबको छोड़ के चैरिटी का काम शुरू कर दें. However, it's something that I'm passionate about. It's something that makes me happy when I get up. It's something that जब मैं रात को सो रहा होता हूँ तो मुझे तसल्ली होती है कि यार या अल्लाह तेरा बहुत करम है मुझ पे कि मैं वो काम कर रहा हूँ जहाँ पे मेरा दिल है. Absolutely. That's important. Manvi is saying it's unethical to have this during work hours. होगी वर्क आवर्स खत्म हो गए मानवी. Not Manvi. Oh, अच्छा हाँ बस हाँ that's true actually. वो बेचारी वो ना Mashallah. She's like माशाल्लाह one of the माशाल्लाह. most hardworking people I know. Yeah, Somebody saying you're mashallah. very witty. Oh my God, Rohan. Hi, Rohan. रोहन कहाँ यार इतने अच्छे से. जहाँ Rahul है वहाँ Rohan है. Find a friend. What type of girl you like, Ghazi? Love you, Ghazi. You are doing job now. Empathy is key to success. Sadly, it is becoming extinct. And empathy is sucks basically. Yeah. So, Everything. I hope you don't have snakes, animal-wise, and in your life. Life नहीं अल्हम्दुलिल्लाह I'm lucky कि everyone I've met प्यार देता हूँ और प्यार मिलता है. So अल्लाह का शुक्र है no snakes. You have the cutest pet names, dude. This man is so sweet. Now I know where I lack. No, Rohan. Please recommend some nice books. Rohan. What are your thoughts on the books being changed and things being taken out of the syllabus? Like we see how schools apologize for adding certain chapters. Adnan, what do you mean? I think this is that curriculum एक हो गया ना पाकिस्तान में सब schools का.
But there are So, people also taking things I think out वो of उसकी syllabus. एक बहुत लंबी डिस्कशन है और वो बड़ी theoretical और उसमें वो है तो Yeah. लेट्स वो हाँ जरा deep discussion हो जाएगी वो perhaps for another day. Yeah. Where do you keep all these animals? हम ये वो बताएं. हम अच्छा नहीं बताओ. सब कुछ मैं बता तो दो. नहीं Best बताऊंगा friend बना मैं लो. नहीं बताऊंगा मैं नहीं बताऊंगा नहीं भाई मेरे डॉगीज को आके लोग आके फिर उठाने की कोशिश करते हैं नहीं मेरे पास ही होते हैं वो मेरे जानवर आई विल पोस्ट मोर अबाउट देम इन ड्यू Yeah. कोर्स मेरा भी वॉलेट गुम गया है. प्लीज ढूंढो. मेरा I दिल गुम think. गया Hi. that was a funny one but yeah I think if nothing, just giving smiles to people is also what we can do. Yes. yeah Ghazi, आप future और में उस मतलब अपना स्माइल्स Ghazi की इतनी wallet. ब्रॉड डेफिनेशन है just gives Manvi, I'm waiting for Sarah to get to your question. Ghazi, आप future में अपना Ghazi wallet business open करना. Hello from India, Ghazi. What do you that's a do good for idea living? बोल दिया है. Do you work out? Who takes your photos? Do you own a DSLR? Do you share food? All from the one and only Miss Manvi Jaira. Do I own a DSLR? No. Who takes my photos? Alhamdulillah, I have great friends. Different responsibilities, different लोगों की लगी होती है. अभी मैं सारों के नाम लेना शुरू किए थे, लेकिन सोनी, Zara, Sidra, thank you so much for taking my photos. Sidra, thank you so much for taking that photo that went. वो shout out मिल गया. Good photo taking skills, I must say. Do you share Yeah, your food, Ghazi? do I share my food? Joy Yeah. doesn't share food. Joy. Do I share food? I love sharing food. मैं बांट के जब मेरे सामने खाना आता है ना तो मुझे लगता है मैं बाद में खाऊंगा तू भी खा अपना भी खिला और मतलब जरा रल मिल के कुछ मेरे फ्रेंड्स होते हैं नो देयर थोड़ा सा हाइजीन इश्यूज वो करके चपड़ चपड़ मेरे खाने की आदत है so I do share food. I love to share food. And one question, Jiska, I don't think anybody can answer because looking at your Instagram, it's a very alien concept. Do you work out? Do I work out? I Alien work out. concept. Do you I've know what recently gone on a working gym is? routine, so I do work out. I'm trying to keep fit, Refer to Ghazi's and stories I for am trying that. to bulk up. For details on his Time workout. lapse workout. Ghazi, when are you coming to Jaipur? I've- If you go to Jaipur, please, you have to take my rishta. Okay. Anyway. I'll tell you later off record. ऑफ रखना अच्छा ठीक है मेरा इंडिया जाने का बहुत दिल है इंशाल्लाह my family came from Saharanpur so I really want to go to India really want to go back to the village where my family migrated from Uttar Pradesh में दिल्ली से 1 I घंटा दूर actually know someone from okay, off record. हाँ सहारा ही तो है बस सहारनपुर से Sahara. No, actually, the name is not Sahara. I appreciate his simplicity. You don't know him. I'm joking. Okay, one more serious question I also wanted to ask was कि तुमने अभी अपने recently एक you said in I think Jio wala interview that you would like to one day become education minister for Pakistan. And अभी chat maybe some people were asking and Mishal was also asking okay, what are some of the steps that you would like to take if given that opportunity? Yeah. So, point is that I don't want a position of authority just for the sake of us, just for the sake of authority. I don't really want. मतलब वो politics वगैरह से मेरा उससे कोई मकसद नहीं है. I understand it's a political position. What I want to do is I want to reform our education sector. और अगर मैं top चीजें तो बहुत हैं जो करने वाली, लेकिन top 3 चीजें that I really want to do is looking at the access to education. And I want to make sure that every child in Pakistan goes to school, especially the girls. उसके लिए जो मुझे करना पड़े गर्ल्स एजुकेशन के लिए लड़कियों को पढ़ाने के लिए और पढ़ाना वो नहीं कि बस 5वीं जमात तक पढ़ लो प्रॉपर पढ़ाना जो करके so that's point number 1 that I really want to do. So access to education. The second is our quality of education. There's so much progress that's being done within the education system in Pakistan, and I really want to make sure कि जो बच्चा स्कूल में पहुंच गया उसको actually उसको quality education मिल रही है क्योंकि currently the way the education sector works is कि हमारे इतने ज़्यादा बच्चे हैं और there's a lot of research on this जो मैट्रिक करके भी उनको पूरा एक sentence नहीं पढ़ना आता. So quality of education को change करना और उसको बेहतर करना गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट में भी. और तीसरा जो मेरी जिंदगी का गोल है is के तालीम और तरबियत साथ साथ.
तो आशा आपकी स्माइल से लगा कि कुछ कुछ मैं कहने वाला हूँ या मे बी सम कमेंट. So तालीम और तरबियत साथ साथ social emotional learning needs to be incorporated within our curriculum so that our children aren't just studying English, Urdu, math, science, but they're also becoming human. पढ़े लिखे जाहिल हमें नहीं चाहिए, पढ़े लिखे हमें करप्ट लोग नहीं चाहिए, पढ़े लिखे मिसोजिनिस्ट हमें नहीं चाहिए, पढ़े लिखे हमें मतलब नॉट अगेन आई डोंट वांट टू मेक इट पॉलिटिकल, लेकिन हमें पढ़े लिखे एम्पैथेटिक काइंड क्रिटिकल थिंकर्स थॉट लीडर्स चाहिए. हम अब गोरे की गुलाम नहीं हैं. उस मेंटालिटी से निकल के लीडिंग अपनी थॉट लीडर्स बने, हम क्रिटिकल थिंकर्स बने, और दैट्स व्हाट आई वांट टू डू. तो inculcate that social emotional learning aspect within every single level in the education sector, and that's अब मेरी जिंदगी का मकसद ही यही है कि ये मैंने ये करना है. So these would be the top 3 things I would want to do if I become education minister. Was just like a broader statement, but that's the reason why I want to work If in you the have, policy space within the policies, education sector. no, absolutely. That does sound like 3 very critical things that need to happen. Sarah, were you going to say something? No. I wanted to ask one thing as well. Like Sarah और मैं अक्सर ये बात करते हैं कि I was gonna say like some dialogue. Oh my god! Like I need to like, clear my head. So Sarah and I often say this. Okay, like okay, so we're seeing so much violence against women. Stemming from men mostly. और हम हमेशा ये कहते हैं कि औरतें जितना मर्जी बोल लेंगी इस बारे में, एट द एंड ऑफ द डे जब तक आदमी खुद नहीं बात करेंगे, जब तक आदमी नहीं कॉल आउट करेंगे, like their friends or we all know के ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में और हर जगह जिस तरह के जोक्स चल रहे होते हैं, और just generally as well, like people say कि boys will be boys, and they will say certain things or talk about women in a certain way, and it's just them being boys. और हमें हमेशा ये होता है कि नहीं यार, but like then the guys should also call out other guys, because वही है ना कि हम तो बोलते रहेंगे, औरतें तो बोलती रहेंगी, पर उसका कोई like obviously it is important, but unless both work together, men and women, there's not going to be a solution to it, because both parties are stakeholders in this. So do you have any thoughts on that? I mean, I know like I'm just kind of putting you on the spot. No. I do have some very important thoughts. Our important thoughts ये हैं कि let's not, I don't want to do what we're talking about here and do it amongst us 3. I think it's about time that we start listening to the women. And as men, I would like to shut up and just listen for a change. So अभी ये करते हैं कि and let me amplify what you're saying. Sarah, आप 2 चीजें, think of 2 things that you want to say. Asha, think of 2 things that you want to say. What men should start doing. And I want to repeat them after you as opposed to tell you कि हाँ मर्दों, तुम दोनों सुनो कि मर्दों को ये करना चाहिए. What do you think, Aisha? What do you think? मर्दों को भी क्या करना चाहिए अभी current given gender violence में? And I'll repeat after you. I think that's an amazing idea. Top of my mind, 2 things if you ask me. One, they need to call out the perpetrators for what they have done. Not alleged, not कि ये हुआ यहाँ हो सकता है, not कि just call them out for what they have done straight away. And secondly, I think the other thing is that stop questioning why why anybody was wherever she was, or anything about the victim. She's not the subject of this. The subject is somebody killed somebody. It doesn't matter who they killed and why they killed her, but somebody killed somebody. And the conversation needs to shift to the criminal in this case and not the victim. Thank you so much, Asha. Thank you for saying that, and I fully agree with you. Sarah, आप बताओ. I think the biggest thing that I feel like what more men should start doing is stopping shit when it's happening. Like anything that's happening on the road, they'll just pass by. If you report it to the police, they'll say ये उनका personal matter है. Whether you can hear your neighbor beating up his wife or mother or sister, they come over, the police comes over. Anybody you like, if
You know, like if I go to somebody in the house and I say, oh, साथ वाले घर से चीखों की आवाजें आ रही हैं औरत की, they'll be like, oh, उनका personal matter. We can't get into that. I think that's a very big thing that we just like kind of turn a blind eye towards violence, especially domestic violence, which is why I feel like the bill is so important to be passed like right now. And secondly, I think not just in this context, I think men should start listening more to women and giving more weightage to women everywhere at the workplace. A woman's opinion at the workplace, a woman's suggestion at the workplace should have the same weightage as a man. A woman should be able to get the same salary as a man, but then even more than that, they should have the opportunity to share the same space as a man at the workplace. So, and again, this is coming from like, I know like only like 5-10% of like the entire population is in that position, but I think like वहाँ से शुरू होगा तो trickle down करेगा. Yeah. So listen to women. Stop questioning. कहाँ गई थी, क्यों गई थी, क्या? Stop it. Stop violence against women when you see it happening. So stop being a bystander. Yeah. And women should be paid equal wages, should be allowed equal economic opportunities as men. Is what are the 4 points. Add something else. जी आपकी जगह आप बोलें. No. Anyway. No. Very seriously, guys should stop. And I know कि buzzwords हैं, बहुत हम buzzwords use कर रहे हैं, toxic masculinity और misogyny, हम बहुत buzzwords use कर रहे हैं, but I've seen a lot of guys who enable their friends. खुद नहीं होंगे, खुद वो दुनिया का सबसे अच्छा मर्द होगा, वो अपनी माँ की भी इज्जत करेगा, अपनी बहन की भी, अपनी गर्लफ्रेंड की भी, अपनी बीवी की भी. लेकिन अगर उसका ब्रो या बेस्ट फ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड, बीवी, बहन, माँ के साथ ठीक नहीं है, वो उसको नहीं रोकेगा. अगर एक लड़का देख रहा है कि उसका दोस्त अपनी किसी भी फीमेल की तस्वीर की कॉम्प्रोमाइजिंग फोटो ग्रुप चैट में शेयर कर रहा है, वो उसको नहीं रोकेगा. अगर मुझे पता है, if I'm a guy and if I know कि my friend is physically, emotionally, psychologically abusive to his girl, and by girl I mean anything, wife, बीवी, wife, girlfriend, माँ, बहन, they're abusive to the women around them. I'm not gonna stop them. यार नहीं, वो बड़ा है, वो संभाल लेगा. And obviously boys will be boys. I think when men start calling men close to them out, a lot of things, because abhi with the whole case, with the Zahid case, with the Salar case, I'm seeing that the men are silent. The women are speaking out. Zara Heather is an amazing person who is calling out so many men. But the men around them are completely silent, which annoys me so much, because it is literally the men, and it's not because of there is a gender imbalance, but like Aisha said, it is men. When men start speaking, that is when like a catalyst movement should go. Yeah. Thank you. I understand and I completely appreciate it and I agree with you. Yeah. So thank you for saying that, and I think I hope कि इस तरीके से मतलब जो आपने बातें कही, I hope that does happen, and I hope men can actually start listening to women, and perhaps we can start that from इसी तरीके से कि चुप हो जाएं और सुने तो यार कि क्या कह रही हैं लड़कियां, as opposed to always being men and trying to speak over women. Yeah, absolutely. That and I think it's actually so refreshing just being able to do that. By the way, we've never been asked कि आप बोले हम सुनेंगे, Ghazi. Yeah, even if it's like a virtual public space, but I think it's just been like, honestly, like just the last 5 minutes have been so refreshing. Because not as an argument or not as a literally as like say what you have to say and I'm listening. I think that genuinely
that was very important, and I hope that we can continue having these conversations, not just now, and I hope that you also continue having these conversations. Yeah, और इंशाल्लाह मतलब going forward we become good listeners as opposed to just being good talkers, and that's और empathy में वो the whole point of being able to listen to what the other person is saying, वो उसकी बिल्कुल उसकी foundation में तो ये सबसे पहले ये आता है कि काले लोग क्या कह रहे हैं कि हमारे साथ क्या होता है, गरीब लोग क्या कह रहे हैं कि हमारे साथ क्या होता है, औरतें क्या कह रही हैं कि हमारे साथ क्या होता है, ये सारी डिफरेंट मूवमेंट्स जो चलती हैं वो क्योंकि इतने ज्यादा लोग जब पिस जाते हैं कि और हजरत अली का जो कॉल है कि कुफर की हुकूमत चल सकती है लेकिन जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती, तो ये जुल्म की हुकूमत जो है जब वही और दैट्स हाउ नेचर वर्क्स कि जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर सोसाइटी रिफॉर्म होती है. सो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग व्हाट यू डिड. Also, Ghazi, you recently held up a placard at a march. Can you please repeat what that placard said? Yeah, it said कि औरतों पे बहुत से लोग हैं जिनको औरत मार्च से मसला है. I faced that. वो मेरी अपनी फैमिली में ये डिस्कशन हुई और ओपन डिस्कशन वो करके, सो जो भी जिसका पर्सपेक्टिव है, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि लोगों को औरत मार्च से ज्यादा तकलीफ है लेकिन औरतों पे जुल्म से इतनी तकलीफ नहीं है. तो वो ये मेरा प्ले कार्ड था लास्ट टाइम कि जितनी औरत मार्च पे तकलीफ होती है उतनी औरतों पे जुल्म पे भी तकलीफ हो जाए तो मतलब क्या ही बात हो लोगों की. Absolutely. And in all of this, we're not saying कि मर्द बुरा है. We're not saying that. It's just that we've been living in this society for so long, where the whole not all men, yes all men, some men, most men concept, it's just been going around for so long that the conversation has moved away from like gender equality, and it's now turned towards कि if a woman is going to or a man is going to stand up for a woman's rights, वो मर्द को दबाने की कोशिश कर रहा है. Whereas women are only looking to occupy the same space, not kicking anyone out. There's more than enough space for everyone. So, yeah. Well, thank you. Yeah, 100%. And Ghazi, I just wanted you to just say one more thing, because तुम empathy का word use कर रहे हो. First of all, for everybody asking, yes, we will be saving this live. At least I will attempt to save this live. अगर कुछ technical glitch हो जाती है तो advance में apologies, but I will obviously save this live. But तुम एक empathy का word use कर रहे हो. Empathy is एहसास basically, right? क्या उर्दू में that's what you. हमदर्दी, yeah. हमदर्दी, एहसास. Right. Yeah. Coming back to thoda sa, changing tracks a little bit. If there is one thing that you want people to take away from this entire episode, including the story, besides the fact that तुम्हें Bollywood रटा हुआ है, what is that one takeaway that you want people? And the best thing is, sorry, before you answer, I know I've just asked a question. When I was reading your tweets, I was reading them in your voice, with the music, with the background effects, with like the whole like I was watching it like as a film, but Star Plus वाले. और किसी ने बड़ा अच्छा लिखा था. I pinned that comment on our feed as well. It felt like I've read my favorite short story in 5 minutes. Yeah. If I were to give one thing, if you were to take anything away from this, I would just say कि हमारी जो सोसाइटी है, और मुझे बहुत बुरा लगता है, आई अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान में बहुत मसले हैं और वो करके मुझे ये बहुत बुरा लगता है कि मैं कभी भी किसी को गैस लाइट नहीं करा. बाय द वे, मतलब पाकिस्तान में आई अंडरस्टैंड बहुत ज्यादा मसले हैं लोगों के डे टू डे जिंदगी में, एक्सेट्रा, महंगाई से लेके, ट्रैफिक से लेके, लोगों के रोजगार से लेके, जेंडर इनइक्वालिटी से लेके. बस ये कि एक सोसाइटी में अभी हम हैं और उसमें हम बड़े फ्रस्ट्रेट हुए हैं,
बहुत ज्यादा लोग अब रोड पे निकलते हैं तो देखें गुस्सा, लोग हॉर्न, वो इवन आई फील कि यार इतनी मतलब वो फ्रस्ट्रेशन निकल रही होती है घर पे जाके लड़ाइयाँ हो रही हैं वो करके. आई जस्ट think अगर if there's one thing that we could take away from this, and I know I've repeated this word over and over again, इसके यार एक दूसरे को के दर्द को समझें. आपका ये अल्लाह ने जो कायनात, मेरा बिलीफ है कि अल्लाह ने कायनात इस तरीके से बनाई हुई है कि आपके मसले का हल आपके पास शायद ना हो लेकिन किसी और के पास है, और आपके पास किसी और के मसले का हल है. तो अगर आप किसी का बंद ताला खोलेंगे तो आपका बंद ताला कोई और आके खोलेगा. और उसी तरीके से अगर वो सोसाइटी में हमने ये चेन एक्टिवेट कर दी तो हर एक का मसला कोई ना कोई सॉल्व कर सकता है. और वो उसी चीज जगह पे आ जाती है कि एक दूसरे के साथ हमने किस तरीके से प्यार से रहना है, एम्पैथाइज करके रहना है, मोहब्बत से रहना है और काइंडनेस से रहना है. सो डोंट लुक एट आप कि यार इसका मैं फायदा करके मैं क्या करूं. अक्सर लोग मैंने देखे हैं ना, मेरा दिल टूट जाता है चीज करके कि यार 5,000 रुपए के पीछे एक किसी बंदे को आप कर्ज छुड़ा सकते हैं जो उसके लिए उसकी जिंदगी का वो मतलब सबसे बड़ी टेंशन है, और आपके लिए सिर्फ एक मे भी हो सकता है किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना, या किसी को आप एक फोन कॉल करके आप किसी का मसला सॉल्व करा सकते हैं जो कि उसकी जिंदगी भर की जो है ना वो कोशिश कर ले तो नहीं हो सकता. सो ना देखें कि यार ये कौन है, इससे मुझे वापस क्या मिलेगा. अल्लाह ने, और अगर हम रिलीजन को नहीं भी देखते लेकिन अगर रिलीजन को देखें भी, अल्लाह ने इस कायनात को बनाया इस तरीके से कि एक जब आप किसी के ऊपर एहसान करेंगे कोई आप कहीं ना कहीं से अल्लाह आपको वो एहसान वापस लौटाएगा. सो अगर आप कर सकते हैं, मुझे नहीं पता था ये बंदा मुझे कुछ दे सकता है कि नहीं, मुझे और बता आई फील और मतलब ये मेरी कतई तौर पे ये नीयत नहीं थी लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इतना सारा लोगों ने मुझे प्यार दे दिया यहाँ से. और कोई भी छोटी नेकी जो है आप करें और बस उसे मतलब भूल जाए और आपको वो कहीं ना कहीं से वापस आके इट जस्ट कम्स बैक एंड पेस बैक टू यू. And that's what I really hope that we can take away from this whole episode, if there's one thing that we were to take away. Absolutely, that's an amazing message. And also I know some people have said कि अच्छा, इतना like Twitter पे लगाने की क्या जरूरत थी and all of that, but I feel like that was so important because you took a part of the public space and you filled it with something positive. True. Right? A lot of people can see that. I know कि a lot of people say कि अच्छा चलो अच्छा काम किया तो फिर लगाने की क्या जरूरत थी, but it has actually encouraged all of us. Yeah, chalo, it has started a conversation around kindness. जो एक तरह से आप इतनी negative news के सर में surrounded होते हो and you start feeling a bit hopeless. So that has been very very important. So thank you for that. Yeah. Is there anything that you guys want to add? Rida is saying, Ghazi, in awe of your kindness and thanks Orange Wall for bringing positive news into light in such a time. Thank you, Rida. Ghazi, you are such an amazing human. Ghazi, you have so kind heart person. You do have so kind heart person. May people come out with such humble attitude, such beautiful thinking. I'm so impressed with a good man. Have him in Thailand's life insurance ads. Falling in love. Mr. Adil Chaudhary, I love you. Is that Sarah, the famous? Let's focus on Ghazi. Love you, Ghazi. And we should obviously continue these conversations going. So we'd love to have you back on here, Ghazi, whenever whenever you feel ready, to share more. I know like there's a lot more happening that you're doing and working on. So whenever you feel like you want to share that, you're always like more than welcome to come back here. And also, even if it's just random bakwas that we will do, I'm sure like we'll find you back here. Basically. Now I know where to come. So yes, please. There's a lot of people asking. पहले भी उन्होंने पूछा था कि राहुल ने बोला क्या when you gave him the wallet. Yeah, नहीं अब वही मतलब he was so happy. मतलब वो literally बहुत खुश. He didn't have words. He was just like वो thank you. But वो लेकिन उसको मतलब he just जब तक मैं दे के निकल भी गया, like that's what he said. He was just like just thank you और मतलब वो he had his like इतनी बड़ी smile and yeah, that's literally what it was. It was just like एक brief सा वो. अब ऐसे लग रहा है कि ये पता नहीं क्या हुआ था और वो करके it was literally just ये यानी कुछ टाइम का लेकिन it was a moment of an event. छोटा सा event हुआ था
that's just all of a sudden become a short story. Yeah, has become that big. So yeah, like he was just like so happy that he got it, and he was just glad. Are you and Rahul friends now? Yeah, Rahul. So I'm abhi mein, yeah. So we've spoken after that. Yeah. Okay. Yeah. किसी ने Rahul. लिखे हाँ Sarah go on. No. Say. No, you were saying it, go on. Okay, राहुल ने कहा नाम तो सुना ही होगा. तो सुना होगा. इजाज हम सबने नाम सुन लिया राहुल का. It's time हम लोग गाजी का नाम सुने. नहीं, but and somebody has asked, obviously this question I've seen elsewhere as well, कि उसने cards cancel कर दिए हुए थे कि नहीं? नहीं, मैं ख्याल बचा हो गया वहाँ पे. Yeah. I know, because it is difficult without cards. Yeah. And a lot of people, there's been, some people, there's been Hani, there's been Abira, some people have just repeatedly commented such nice things about everything. Shivraj as well. I know we haven't wanted to talk to you. We haven't been able to add these people. They've just been commenting throughout. But we may do another one of these. MK, has been a very loyal follower from a very long time. So yes, we will be back here more often. And thank you, to everybody who has. I'm just a bit wary कि अगर हमने थोड़ा सा और लंबा किया तो हम save नहीं कर सकेंगे. Yeah, that makes sense. Aisha, I'm just thankful to everyone who's just said nice things. I'm not being able to read comments, but then for some reason, like inshallah, once you save it, I will go through the comments and go. But thank you so much, everyone. I'm really humbled by all of your nice gestures and everything nice that you've said about me. और बस दुआ करें अल्लाह मुझे इसी तरीके से humble हम मजीद हमल इतना मॉडेस्ट रखे मैं इसी तरीके से perfect human being. Sorry, I meant कि just remember me in your prayers and मतलब जब अगर आप जो भी अगर if there was kindness, if there was a smile that I was able to put on your face, just say a prayer for me whenever you pray. And I'm just very grateful for everything nice that has come through people and my way. Absolutely, and thank you, for bringing this positivity into our lives, that laughter, that is so important, and great having you here. And I hope people can kind of stay in touch. Everybody who's watching, please, do stay in touch with us. माफ कर दीजिएगा अगर if I'm not able to reply. मेरी मतलब I've been very मेरे दोस्तों ने मुझे मैसेजेस यहाँ पे आ रहे हैं तुम्हारी शक्ल लग रही है कि तुम मतलब कितने हफ्ते से तुम्हें क्या हुआ है. गाजी हमें भी रिप्लाई नहीं करता. It's okay. नहीं, मुझे रिप्लाई करता है. मैं गाजी को रिप्लाई नहीं करती, which is So I will try my best to get back to people, but I do apologize if I'm not able to. I'm really sorry, guys. Absolutely. Raja, I want to say that you put human in humanity. उससे पहले क्या होता था humanity? You put the man in humanity. नहीं लोगों का अभी लोगों को लग रहा है हम अच्छे जोक्स हैं हमारे, वो अच्छे वाले लेवल पे रखते हैं, वो वाले पे नहीं. Thank you. It was very nice talking to you for the first time. Yeah. For the first time in a civilized environment, yeah, sure. Safe space. But yeah, thank you so much, Aisha. Inshallah. And can I also just say, Aisha and Sarah, thank you so much. I know you guys specifically want to uplift people. You want to amplify voices. You guys do a great job in Orange Wall, specifically not kind of just following what everyone else is doing, but trying to spread positivities and raise some important questions that you guys do. And as we did for a bit of this chat as well, which I'm really thankful to both of you for. No, glad that that we have this space actually. Grateful for that. But yes, on that note, I am going to inshallah now try and save this. So I hope to God you save it. Good luck. Thank you everyone who joined from India. Thank you everyone who joined from Pakistan. Thank you everyone who joined from anywhere else in the world. Thank you for coming, guys. Thank you. And guys, please keep the momentum going. And once again, do follow Ghazi as well. There is a lot more to him, too much more to him actually, that you will find out. And also, right before leaving, one thing if you guys want to take away from this entire session is do one kind thing and inbox us, please.
keep Yes. it going, keep it कोई अब rolling. hashtag कोई बना दो ताकि people can do a thing and like send it to Orange Wall. Perhaps that can kind of just inculcate a culture of kindness or kind acts that people can start doing. Can you just say Hani really quickly? She's been wanting you to say her name. Hi, Hani Didi. You're one of those celebrities now. And Hamna Celebrity. Fatima, if it was so boring, Jani, why are you still here? Itna bhi nahi hoga. On that note, we will definitely, like Ghazi said, we will make a hashtag. Hashtag one kind thing. Yeah, hashtag one kind thing. Yeah, please do a kind thing and send it over to Orange Wall. And इसीलिए perhaps तुम लोग लंदन में और मैं लाहौर में हूँ. तुम लोग के दिमाग चलते हैं. Here's to all of us being in the same city together soon as well, inshallah. But on that note, everybody, thank you so much for joining in. Thank you, Sarah. Thank you, Ghazi, for sharing so much more. I know there were some questions that were kind of in your personal space. And thank you for allowing us in there as well. But thank you, everybody. Hopefully, see you soon, for another important chat. Take care. Thank you. Hafiz. Bye-bye. Oh, खत्म करने के लिए I'm gonna press the cross and hopefully it will give me the save live option, right? yes, inshallah. Inshallah, guys. I'm doing this now. Bye.